and by governing the state in line with dharma, along with collecting taxes which are in consonance. अब डायरेक्ट टैक्स की मैं बात करने जा रही हूँ. This is Mahabharata Shanti Parva Adhyaya, Shloka 11 from 72. Drawing wisdom from our ancient texts, we continue on the path to progress. The proposals in this budget, while continuing with our declared policy of stable and predictable tax regime, intend to bring more reforms that will take ahead our vision to establish a trustworthy tax regime. This will further simplify the tax system, promote voluntary compliance by taxpayers, and reduce litigation. Introducing new updated return. India is growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust पुरातन ग्रंथों में कहा गया है, महाभारत में कहा गया है कि राजा को प्रजा के कल्याण के लिए कई आधार सामने रखने चाहिए और कई सुधार करने चाहिए. उसी को ध्यान में रखते हुए मैं प्रत्यक्ष करों को लेकर कुछ ऐलान करना चाहती हूँ. मैं कई और रिफॉर्म्स की बात देश के सामने रखना चाहती हूँ. एक विश्वास आधारित जो कर प्रक्रिया है उसे रखना चाहती हूँ, जिसमें वॉलंटरी कंप्लायंस हो, यानी अपनी स्वेच्छा से कर घोषित करने की नागरिकों की इच्छा सामने साफ झलकती हो. There will be a trust repost in the taxpayers that will enable the assessee herself to declare the income that इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक पारदर्शी व्यवस्था तैयार की है while filing her return. और full details of the proposal are given रिटर्न दायर करते हुए जो गलतियां होती हैं या जो समस्याएं होती हैं उन्हें भी आसान बनाने के लिए, उनका हल निकालने के लिए हम काम कर रहे हैं. Rate and surcharge for cooperatives. Currently, cooperative societies are required to pay alternate minimum tax. अब 2 साल तक पुराने आईटी रिटर्न्स संभव होंगे. However, companies pay the same. जो आईटी रिटर्न्स हैं वो 2 साल तक आप पुराने आईटी रिटर्न्स अपने दायर कर पाएंगे. To provide a level playing field between cooperative societies and companies, I propose to reduce this rate for the cooperative societies also to 15%. इसके बारे में और ज्यादा जानकारी, ज्यादा डिटेल्स वित्त विधेयक में आपको मिल पाएगी. यानी आईटीआर में जो गड़बड़ी है उसे आप सुधारने में 2 साल का समय ले सकते हैं. रिटर्न भरने में जो गलती हो उसे 2 साल तक आप उसमें सुधार कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी आपको वित्त विधेयक में मिलेगी. Enhancing income of cooperative societies and its members who are mostly from the rural and from farming communities. Tax relief to persons with disability. The parent or guardian of a differently abled person can take an insurance scheme for such person. The present law provides for deduction to the parent or guardian only if the lump sum payment or annuity is available to the differently abled person on the death of the subscriber, that is the parent or the guardian. There could be situations where the differently abled dependent may need payment of annuity or lump sum amount even during the lifetime of their parent or guardian. I propose thus to allow the payment of annuity and lump sum amount to the differently abled dependent during the lifetime of the parent and guardians, that is parent or guardians attaining the age of 60 years. Parity between employees of the state. कॉर्पोरेट टैक्स 18 से घटाकर 15% करने का मैं ऐलान करती हूं और सरचार्ज 12% से घटाकर 7% करने का मैं ऐलान करती हूं. National Pension System (NPS) Tier 1.
This is allowed यानी कॉर्पोरेट as a टैक्स अब deduction 18% से in घटाकर computing 15% the किया income गया of the employee. और कॉर्पोरेट टैक्स पर जो सरचार्ज लगता है वो 12% से घटाकर 7% किया गया। Of 10% of the salary in case of employees of the state governments. To provide equal treatment to both central and state government employees, I propose to increase the tax deduction limit from 10% to 14% on कॉर्पोरेट टैक्स की सीमा 10 करोड़ तक की गई है। ये बड़ा ऐलान इस वक्त का बजट में कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज 12 से घटाकर 7% किया गया। Security benefits of the state government employees and bring them at par with central government employees. दिव्यांगों के माता-पिता को टैक्स में छूट का ऐलान कर रही हैं निर्मला सीतारमण। Startups have emerged as drivers of growth for our economy. Over the past few years, the country has seen a manifold increase in successful startups. Eligible startups established before 31/3/2022 had been provided a tax incentive for 3 consecutive years out of the 10 years from incorporation. In view of the COVID pandemic, I propose to extend the period of incorporation of the eligible startup by 10 से 14% कंट्रीब्यूशन बढ़ाया जाएगा जिससे कि लोगों को लाभ मिल सके और स्थिति सुधारी जा सके। एनपीएस में योगदान 10% की जगह 14% किया गया। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस में 10 से 14% बढ़ावा। Certain domestic companies, a concessional tax regime of 15% was introduced by our government for newly incorporated domestic manufacturing companies. I propose to extend the last date for commencement of manufacturing or production under Section 115B(ab) by 1 more year, that is from 31st March 2023 to 31st March 2024. टैक्स इंटेंसिव स्टार्टअप्स के लिए मैं 1 लाख 1 साल के लिए और बढ़ाना चाहती हूं। 1 साल का लाभ इन स्टार्टअप्स को मिल सके। कोरोना महामारी के चलते इन्हें काफी दिक्कत हुई है और इसीलिए स्टार्टअप्स को 1 साल का और लाभ मैं देना चाहती हूं। There has been a phenomenal increase in transaction in virtual digital assets. The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. Gift of virtual digital asset is also proposed to be taxed in the hands of the recipient.